Boring. Isn't there anything else more interesting to do? Paimon coming in! Paimon coming in! Is this level okay? Can you hear Paimon? Being too popular. Hello. प्लीज करूँ क्या? इंक्रीज करूँ वॉइस अभी ठीक है क्या? भाई बताना ठीक है क्या? अभी भी ठीक नहीं है क्या? Tea parties are a must for the well-mannered. If you'd like to learn the proper etiquette, I'd be happy to teach you. सही है. ठीक हो जानी चाहिए शायद. Hello. Huh? Is it just Paimon? Or is there a sweet fragrance in the air? Huh? Did you hear that? It seemed like it came from those ruins over there. Uh-oh. It looks like the treasure hoarders have locked someone inside. Shower me with praise! Direct assault! You're open! Ha! Ha!
You're open! Ah. Ah. Ha! Ah. Strike a pose! Speed of light! Huh? Ha! It's Thank you for your help, Clean and kind throw it. travelers. If you hadn't come to my aid, I surely would have rotted in this cell. Those treasure hoarders. When their mood was good, they'd rearrange those pots of sweet flowers. When they were in a bad mood, they'd rearrange my face. Aw, it was nothing. No need to thank us all at once or anything. I understand. Don't worry. I will compensate you both. Don't say that. I only escaped this predicament because of you. I'm Meng Dan, a supplier for Mingxing Jewelry in Liyue Harbor. I often walk around these mountains in search of antiques. I never expected that those treasure hoarders would have their eyes on the same ruins that I had. Before I knew it, they'd caught and imprisoned me. Is there anything that you lack? Antiques, treasure, various knickknacks, you name it. Well, as long as you want what I have to offer, of course. Wait a moment. Actually, we are looking for something. Oh? And what might that be? Do you have a box that can store presents? We'd like a pretty one. The kind that you can use to store snacks. Of course we do. How can one sell antiques without gift boxes? At Mingxing Jewelry, we have the best gift wrapping service in the 7 nations. Now just give me a moment, and I'll let the boss know. Great! Paimon's sugar-frosted slime now comes in a beautiful package. मुझे पहले जाके वो कर लेना चाहिए क्या? Paimon coming in! Paimon! Ooh, look at that slime. It looks crystal clear and very delicious. That's the one. Ha! incoming! Ha! Yeah! Time for retribution!
कैसे कहूँ मैं तुम सा कोई ना है मैं तेरे आस पास रहूं दिल भी ना है जज्बात मेरे सभी तू ही जाने जितना भी देखूं दिल भर ना पाए कैसा समा है हम तुम यहाँ है जाहिर करूं क्या है जो मेरे इरादे तेरे हवाले में किसी बहाने जाहिर करूं क्या है जो मेरे इरादे मेरे इरादे ऐसे ही गुनगुनाता रहूं तेरे लिए मैं चाहूं कि मुझ तक रहे तेरी निगाहें कैसे मैं कहूँ कैसे मैं ये कहूँ असर जो तेरा मेरे दिल पे हुआ है कैसा समा है हम तुम यहाँ है दिल की Right, come in. पुकार Fine, good. को सुन लेना तेरे हवाले में किसी बहाने Great. जाहिर करूं क्या है जो मेरे इरादे मेरे इरादे देख ले तू आज जिए मेरी आज भी मैं तेरा यही आरज़ू जो तेरी होने लगी होशों में रहता नहीं ना जाने क्यों तू ही तू दिल में बसा है तेरे Hey there! A guy called Mung Dan told us that we could get a nice and shiny box from your store. Uncle Mung already told me about it. Thank you both for saving him. Many of the best goods in our store were found by Uncle Mung. If anything were to happen to him, it would be impossible for us to continue doing business. Here, this container is itself an antique, with at least 140 years of history. It's already been cleaned. Will it do? Yep. It's great! Hang on a moment. Can we... Sure. Please help yourselves, as long as it's on our shelves. Traveler, this clay pot looks really awesome. If we use an antique as our mixing bowl, we should be able to make a great snack. It's done! The one and only sugar-frosted slime! Carefully now. Into the box it goes and dust it over with a bit more powdered sugar. Oh, yes. You might want to use these 2 freshly picked flowers as Woohoo! It looks beautiful! Great! Now that we've put all that we've got into this box, let's go to the Jade Chamber to see Ningguang. Jewelry's out of stock, but we have some new items in.
जाने क्यों तू ही तू दिल में बसा है तेरे बिना क्या जीऊं बिखरा ये मन क्या सितम तूने है ढाए फिर भी मैं कुछ ना कहूँ ना जाने क्यों दिल में तू क्यों ना जाने क्यों एक तू ही तू ना जाने क्यों फिर भी मैं कुछ ना कहूँ Too many wishes, too many mistakes that we made. For the certainty we was finding love in a hopeless place. करे ना था understand एक दूजे को इस हलचल में खो गए चाहते तो एक गल सुन लारिया वे रात भर याद तेरी आती रही दिल जला मैं पहले से और जलाती रही ढूंढने जो निकला कुछ सुकून जमाने में चाह कर भी साला दिल कहीं लगा ही नहीं एक पल घर से मैं खाने में घोल करके पी गया वो खत तेरे पुराने में एक बात तो बताओ जान ठीक हूँ ना वक्त बहुत लग रहा है तुमको आने में आओ के रातें अब ये काटी नहीं जाती हारा सब तुझ पे मुझ में कुछ भी नहीं बाकी अब तो ये आलम है दिल काबू में नहीं रोकूं कैसे खुद को कोई बताए एक तो तेरा गम तड़पाए एक तो तेरा नाम न जाए एक तो नींद आती नहीं उस पे तेरी याद रात भर आए एक तो तेरा गम तड़पाए एक तो तेरा नाम न जाए एक तो नींद आती नहीं उस पे तेरी याद रात भर आए रेवोल्यूशन ढूंढ रहे ये है रेवोल्यूशन ढूंढ रहे Though the clouds According may to darken. Kuching, this is what we should say. Excuse me, do you sell the moon here? Yes. How many would you like? It's not convenient to speak of numbers here. Ah, well said. Please, use this to ascend to the chamber. Yes, speaking of which, are you two the guests that Lady Ningguang has arranged to meet with today? Yep. And yet the code they used was not the one for guests, but for the Yuheng. What's going on here? I've been waiting for you, returnee from फायरमैन Joyan इतना Karst. बोलती है It's Ningguang. Since this is our first meeting, we've prepared a gift. I hope you like it. Oh, for me. You have my thanks.
It seems that I have made things difficult for you, considering that you were supposed to be my guests. Oh no, it's nothing. I'm glad you like it too. This palace floats in the skies, higher than the peak of any mountain. From this vantage point, one may survey all of Liyue. I have been gathering the funds necessary to build it from the time I began learning the merchant's craft. And since becoming the Tianquan, I have spared no effort in hiring the best craftsmen to constantly extend it. At first, it was but the size of one room. Now, it is large enough to blot out the moon in the skies above Liyue. One day, I believe it will overshadow all 7 nations. Wow. Not many from outside Liyue earn the right to ascend to the Jade Chamber. But I have been in correspondence with the acting Grand Master of the Knights of Favonius, who spoke highly of you. As such, I have been putting eyes and ears out ever since you reached Liyue. What? And I finally got wind of your movements when you were on the way to Wangshu Inn. Wait, was Vergoldet one of your people? Just Vergoldet? No. Everyone at Wangshu Inn is one of ours. At the Guizhang Ballista, yes? You weren't peeking on us from the skies the whole time, were you? I fear that peeking would have been a little difficult from this altitude. Our eyes and ears are more than sufficient. You two are very interesting people, after all. It would be natural to take an interest. Well, I wouldn't expect you to trust us, considering that you have had far more interactions with the Adepti. I believe that you've heard of the Archon War. Many gods used to walk this earth, and many long wars were fought between them that did not abate until 2,000 years ago. Much blood was shed, and many lives were lost. In the end, only 7 victors remained standing in Teyvat. They built cities and nations on the corpses of the vanquished, and thus began the era of the 7. You can see Goyun Stone Forest from here, I trust. It is no natural rock formation. Those are giant spears of rock hurled by Rex Lapis during the war. Beneath the spears lie those cast down by Rex Lapis in those days, gods that failed to seize the title of Archon. Not only is it true that gods may die, but so too has the membership of the 7 changed over the last 2 millennia. Rex Lapis's passing is an unimaginable disaster for Liyue, but the Order of the 7 will not collapse simply because of that. Another Lord of Geo will arise sooner or later. Yet, how are we to forget Rex Lapis? When that time comes, the relationship between the people of Liyue and the gods and Adepti will surely be different from before. Even in a new era, the Liyue Qixing remain Rex Lapis's former subjects. Do you really think us capable of having played a part in his demise, of lacking the foresight to see the certain repercussions? That day at Yujing Terrace, it was also very sudden. Even I was caught completely off guard. You were there, you no doubt saw. But our enemy has long lain hidden within the harbor. If we do not act against them now, they will surely gain the upper hand. Hiding the Exuvio was a necessary maneuver to take the initiative back, to play the spider while our foes scurry about. Who's this enemy you're talking about? What do you think, traveler? Huh? What are you two talking about? Well answered. The scenery out here is fine indeed, but the wind is a little strong. Our preparations to receive guests within are complete, so please,
This way. Wowee! What a huge hall! Paimon's never seen such a fancy place before. यार ये स्टेयर्स इतने घुमा घुमा के क्यों बनाते हैं? Be at ease, you two. Make yourselves at home if you wish. Can we really? I have invited you two here as friends. First, naturally. Ooh! Isn't this that legendary wall? Why, you've kept your ear to the ground, I see. That's because even the storytellers are talking about it. Everyone's after a piece of paper from that wall. It's super famous. That's because that wall records Leo's secrets. Merchants have always been attracted to secrets. But the secrets of the mercantile world are of no interest to you, are they, traveler? You're rather special, really, and I think you're quite aware of that. If possible, I'd like to have your trust. But if you were to choose the more trustworthy person between myself and Kuching... You'd pick Kuching? Nah, I had a feeling. I originally thought her a bit too hard-headed. With someone of her character on the Qixing, I've had some extra messes to clean up behind the scenes. But after she said those words, the time of the Adepti has long passed. If even the Liyue Qixing don't want to face that truth, then what future is there for Liyue? Well, I must say that quite a few of my doubts have been dispelled. I won't deny that Rex Lapis's passing seems advantageous to us. But, for Liyue's sake, we cannot allow ourselves to be shackled by rumors of our usurpation of power. Indeed. It seems that you understood what I meant to say from the very beginning. I called for the gag order and for the Exuvia to be hidden to temporarily stabilize the situation, and also to prevent something similar to the incident in Mondstadt. With Rex Lapis's death, the Fatui have busied themselves with many clandestine actions beyond their diplomatic remit. As the Tianquan, one responsible for Liyue, I cannot be too concerned with appearances when opposing them. Allowing the rite of parting to take place was also meant to buy some time for us to take control of Liyue's administration. It's exactly as Zhongli said. The Qixing only provided the venue for the rite so they could use us for their own ends. Wait, that's right. Speaking of ends, could I say one other thing? Of course. Paimon's heard that anyone who sends a greeting gift gets a little something in return. So, does that include us? It's all right. I like direct people. Well, we have made quite a bit of trouble for you recently. How about this? You can pick any one object here as you please, and you may take it with you. Yay! Paimon was just waiting for you to say that. Let's see, what should we get? One of the sheets on that wall. Don't look at Paimon like that. One of these sheets of paper will sell for crazy prices, even if it's only as large as Paimon's fingernail.
Just imagine how much more a whole untorn sheet would sell for. Let's grab one, the biggest one. Huh? Well, that was an easy search. The biggest sheet is right up there in the most obvious spot. Let's go with that one. La 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 la. Let's see what's written on it. Huh? There's a place marked with a circle on here. Oh, could it be treasure? Whatever it is, it better make us filthy rich. Let's see what's written over here. Sigil of permission, something, something, Fatui, research, copy. Aw, that doesn't sound like treasure at all. This piece of paper shows that a Chising spy discovered traces of classified Fatui research on the Sigil of Permission. Oh, Ningguang did say that the Fatui have been up to all kinds of mischief in the shadows of Liyue, spreading rumors, wanting to get their hands on the Archon's body and whatnot. But research on the Sigil of Permission? Paimon wonders what they're up to. Speaking of which, there's also some connection between you and the Sigil of Permission. Seems there's still more for us to find out. Oh, you really think so? Well, should we not go then? Oh, so you're saying that it's precisely because we can't completely trust Ningguang that we should confirm the truth of what she says for ourselves. That's way out of Paimon's league. Paimon thinks she's been nothing but good to us. Anyway, we'll see if you're onto something. Before we look for Zhongli at Dihua Marsh, let's go to the place marked out on these papers and see if the Fatui really are up to no good there. काम नहीं लायक है तेरे बिन रात दिन भीगता था मैं अश्कों की बारिश में आज तू है सामने जो कम हुए हैं सारे फासले मैं साइड से जा रही हूँ टेलीपोर्ट अनलॉक करूँ आज तोड़ दे चाहे फिर मुझे तुझसे टूटने में क्या हो भी गया मजा है हम मगर नहीं बाहों में तेरी किसकी फिर भला ये हंसी जगह है आज तोड़ दे चाहे फिर मुझे तुझसे टूटने में भी नशा है हम मगर नहीं बाहों में तेरी किसकी फिर भला ये हंसी जगह है बेजुबान सी थी रातें बरसी फिर
इतने Are नहीं you डरना प्लीज। here to play? Blink. मैं टेलीपोर्ट हूँ। मिल जाऊंगी यार, कैंसर कैंसर प्लीज। ले आ गया फिर तेरे दरवाजे के बरसात से बचने का और बहाना न मिला। बाहें तेरी घर से लगी और उस दिल को कोई कौन सा गाना ठिकाना बजा है? न मिला। और इसका इंग्लिश वर्जन ज्यादा अच्छा है। पारो इंग्लिश मेरे क्या सॉरी पारो इशारों इशारों में बात समझ लेना। कहाँ गया वो आंचल वाला? दिल के टुकड़े हजारों यही था ना? बिखरने से पहले अब कुछ होश नहीं है। तू मुझको पिला देगा क्या? मैं पी कर जो भी कहूँगी तो सुबह भुला देगा क्या? तू बाहों में रख ले दो पल फिर चाहे दूर हटा दे। मैं इतना गोद मोटा है में यार ये तो। Perfect to be at the location इससे written कैसे down on this piece of देगा paper. क्या चाहती नहीं And they look really mad at us too. है तू Windblade, be gone! Let my name echo in song! Nowhere to hide. मैं इनसे कैसे ये तो इतने को एक बार There can be no excuse for this. रो मेरा इतना स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर मर भी गया। Maybe I wasn't meant for this world. वे दो एक साथ लड़ रहे हैं। मुझको सुला देगा क्या? चाहती नहीं तेरी याद कसम से कि दिल का भरम है तू। बाकी नहीं अब कोई शर्म जाना एक धर्म है तू। जो कहता था मत जियो ना मेरी जान जहर है। How dare he! कैसे Still कोई couldn't do it. अब और जहर क्या पी। Stronger than I thought. Let's end this quickly. हाँ मेरे कुछ होश नहीं है। तू मुझको पिला देगा क्या? मैं पी कर जो भी कहूँगी तो सुबह भुला देगा क्या? आज पकड़ लेना कि शराबे खत्म दिए सारे जख्म तेरे भर ना सके सोनिया। अरे मैंने टैग करा है। के सुला दे सनम मुझे आओ बाहों में मेरा। एक जान गई एक जाती नहीं एक और भाई सितम मैं ना उनसे तो मैं नहीं लड़ पा रही हूँ। जिस तो बहुत ज्यादा पाना स्ट्रॉन्ग था है। उस खो बैठे ये काफी नहीं है क्या? मैं 29 पे हूँ और वो 40 पे। एक मिनट। कि अब कुछ होश नहीं है। तू मुझको पिला देगी क्या? मैं पी हेलो। कर लो, जो भी क्या हुआ क्या हुआ क्या कहूँगा। हुआ? यार मैं इनसे कैसे लड़ूं? ये तो बहुत अरे, बड़े लेवल के हैं। कितने 40 लेवल के हैं वो? हाँ जाओ उधर कौन जाओ, से? सारे डिफरेंट डिफरेंट एबिलिटी यूज करो उन पे, होएगा। अरे
मैं चलो कुछ भी कर लूं, खाली उनके एक अटैक में मेरी आधी हेल्थ हो जाती है। एक बार जाओ, दोबारा जाओ, दिखाओ मुझे, मैं देख रहा हूँ। मैं जस्ट खाने के लिए निकलने वाला था। तो मुझे मरते हुए देख के जाओ एक बार पहले। नहीं नहीं, मार दो फिर हम। आर्चन क्वेस्ट है ना ये, मैं ज्वाइन कर Better than सकता nothing. हूँ शायद। हाँ, आर्चन क्वेस्ट है क्या ये दबाना? हाँ, आर्कन क्वेस्ट ना। इसमें ये ज्वाइन का तो आ तो रहा है, मैं ज्वाइन करके मारूं? हाँ तो आओ ना फिर। नहीं नहीं आ रहा हूँ, ज्वाइन का नहीं आ रहा। नहीं ये आ रहा देखो, है जो। 2 इतने मोटे मोटे लोग मेरे को मिल के मार दोगे मार तुम? रहे इजी है मारोगे, चलो। चलो चलो हैं। अभी चलो, उधर ही देखना चलो मुझे सीधा। पिटते हुए, अभी देखना। अरे 1 2 3 4 बहुत लोग हैं। वही एक तो सेकंड दो, कितने सा। मैं ऑन करता हूँ, अपना गेम ऑन करता हूँ। अब जाओ मत, रुक जाओ। उधर फ्रेंड तो ज्वाइन कर लेना कि लोग ज्वाइन कर सके तो मैच पे। वो कर दो। अरे इसको तो मार पा रही हूँ मैं अकेले तो। इसकी तो जा रही है हेल्थ जल्दी जल्दी। क्या बात है। हाँ, Don't blink! Hey! Yoo-hoo! ये तो मर जाएगा। जल्दी करो जल्दी करो, खाने जाऊंगा खाने जाऊंगा खाने जाऊंगा। मारो 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 मारो। मर गया, एक मुर्गा मर गया, एक मुर्गा मर गया। पर अब अब ये डिफरेंट जा रही है। डिफरेंट एबिलिटी यूज करोगे ना, तब ज्यादा होएगा। और यू कैन यूज योर हीलर। फ्री ने हीलर भी तो है तुम पे। वो हील के लिए क्या बताया था आपने, क्या कैसे हील होता है? लेफ्ट क्लिक होल्ड करके। ओरिना यूज करूं और लेफ्ट क्लिक होल्ड करूं? Speed of light! करो करो। The show begins! किया। Ah, देखो इजी तो मार रहे हो। अरे कैसे चेंज होते थे? take it! बच्चे छोड़ के वो हो जाएगा। अभी हील Go कर लो पहले on. सारे You कैरेक्टर अपने। have my approval. कैसे करूं वही तो पूछ रही ये हूँ। हो तो गया, हो तो रहा है हील, देखो ना। यार ये बहुत बड़ा है, ये नहीं मर पा रहा है मुझसे। फायर मारो, फायर इस पे। सुनो, अपना फरीना की ई दबाओ, लाइक अल्ट मारो। फरीना का अल्ट मारो, Time to shine! करो अल्ट मारो फरीना का। मारे डिलुक को मारा आपने। नहीं उसका भी मारा। Windblade! डेड रिग्रेट हो रहा। Prepare to be blown away! क्या खाऊं मैं अब? मैं ज्वाइन नहीं कर सकता। F2 दबा के वो कर दो ज्वाइनिंग का। वो रिस्टोर हेल्थ वाला खाना भी तो होता है ना? है ही नहीं, आप पे ही नहीं हो। क्या करूं मैं अभी? F2 दबा। अरे फरीना है तो गई हीलर। ये फुरीना में आपने बोला था ना कि एक तो बच्चे होते हैं वो 3 और एक और कुछ होता है, उसमें से हील किससे होता है? वो एक से जो सिंगल होता है। वो चेंज कैसे होता है? ये करो, वर्ल्ड परमिशन को कर दो वो अलाउ। वो तो मैं कर रही हूँ, पर वो कैसे होता है? वो जैसे आप ई दबाओगे, 3 बच्चे जैसे वो होते हैं ना, हाँ। उसका जैसे लेफ्ट क्लिक होल्ड करोगे तो वो एक सिंगल बन जाएगा ऐसा। अच्छा ठीक है, कर लिया मैंने एक सेट। मुझे लगता नहीं आप मुझे ज्वाइन कर पाओगे। कौन और परेशान अब कर रहा है? तो तो मैं, मेरे को बताओ, मैं आ गया। अरे अब मैं शायद क्वेस्ट कैसे होगा, हो जाएगा क्या? कहाँ है बंदे? कहाँ है नहीं, अनेबल टू इनिशिएट क्वेस्ट आ रहा है ना। बंदे? कहाँ है बंदे? मेरे पर क्वेस्ट होगा ही नहीं। नहीं हो रहा क्या? हम्म,
देखो, अरे ये रे ना थोड़े बहुत लोग हैं, तेरे ने मार के ही चले जाता हूँ। तो वैसे भी खत्म हो गया, तो दोबारा ही मारना पड़ेगा। नहीं 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 नहीं, शायद ये रिस्पॉन नहीं होंगे, शायद शायद शायद, आई एम इन डाउट। तो 3 मार दिए, चौथा शायद मोटा यहाँ था इधर। ठीक है, मार दिए मार दिए मार दिए। किक करो मेरे को। फुरीना चलो का एक बार आप फुरीना का वो कर लो पहले, यूज करके ना देख लो हील का। हाँ बताओ बताओ। यहाँ पे आप ऊपर टेलीपोर्ट पे ना, ऐसे ही ना। और देखो रुको। हम्म, ऐसे ही नीचे आओ ना। नीचे। हाँ, ई दबाओ, Ah, ई दबाओ। strike a pose. ये तो है डैमेज देने वाले। अब दोबारा हिट, ये हीलर। ठीक है। इसके पास जितना रहोगे उतने हील करता रहेगा। ठीक है ठीक है। F2 दबा के वो कर दो। F2 दबाओ। एक मिनट, हो तो गया। रिटर्न टू सिंगल प्लेयर कर लो, रिटर्न टू सिंगल प्लेयर। इसे मारना पड़ेगा उन्हें। पहले फुरीना से हील कर लो, वैसे मैंने सारे मार दिए हैं, मुश्किल स्पॉन होंगे। दिख तो रहे नहीं है। मर गए मर गए मर गए, जाओ जाओ। सभी होता है। हम्म, वाह ये तो सही है। There are so many और आप talismans कंटिन्यू here. करो, I ठीक है, haven't मैं आता seen हूँ। this pattern हाँ। before. But, oh, Paimon knows. It looks just like the sigil of permission the child gave you. But how did a relic of the Adepti end up in the hands of someone like Child? Suspicious. Oh, that's right. Cloud Retainer said that when the Lord talismans like that were once used in the Ark, maybe the Fatui are copying the Sigil of Permission, being able to channel divine power, and the plot thickens. Alright, that's the last stop on our rite of parting purple. Let's go! तू सुबह बुला देगी क्या, तू बाहों में रख ले 2 पल, फिर चाहे दूर हटा दे, मैं गोद में रख लूं अगर सर, तू मुझको सुला देगी क्या, जाती नहीं तेरी यादें कसम से कि दिल का भरम है तू, बाकी नहीं अब कोई शर्म, जाना एक धर्म है तू, जो कहती थी मत पियो ना मेरी जान Right on जहर time. है। I myself only arrived moments ago. Did you enjoy your visit to the Jade Chamber? It was so big and pretty and expensive. Paimon's never seen such a fancy schmancy place before. Indeed. It's second to none in all of Liyue. Then you met with Ningguang, I trust? What did you talk about with her? She's super rich and so generous. But yeah, her take on Ningguang is quite different from Paimon's.
She thinks that even the tactless you... Oh, so you also met with Kuching then? What? She said the time of the Adepti has long passed. If even the Liu Qixing don't... No, indeed, contrary to the ever-bold Kuching, Ningguang is more of a businesswoman at heart. Although she's friendly, there's no way of clearly discerning her true intentions. Yes, she has only relied on herself to rise to her current position. It's said that she's the one behind the constant expansion of the Jade Chamber. It's the second most important thing to her. Even if she ever gave up... The Jade Chamber is only second. What's the Why, Mora, of course. All Ningguang talked about was the Fatui this and the Fatui that. She said that after Rex Lapis was murdered, the Fatui have constantly been trying to sink their fingers into Liyue, and that they aren't to be trusted. That is how the Fatui have always been. It doesn't surprise me in the least. No matter what they may be planning, you must be careful when dealing with the Fatui. Always be on your guard. So, is there anything we need to get for the rite of parting in Dihua Marsh? Yes, as a matter of fact, there is. Today, we'll be gathering wild glaze lilies. Glaze lilies? But why did we come all the way out here? Doesn't the garden in Yujing Terrace have some? Even Qingse Village has glaze lilies. Oh, right! Paimon remembers that Madame Ping is always tending to flowers. Maybe we could ask her? No. Those lilies have all been gardened by people. Dihua Marsh used to be full of glaze lilies. It is a sort of joyful flower that listens to human song. Before the Archon War, Dihua Marsh was all dry land and fertile soil. But the war caused landslides, and the land was flooded, turning it into the marsh. Of course, there are some kinds of flowers that have been preserved and gardened by people in the city. Wild glaze lilies have the strongest fragrance. If we want to follow the true tradition of the... But I'll need your assistance in gathering these flowers. That's correct. So how good is your singing? Really? What? We'll only know once she starts singing. Being too popular can be such a hassle. Who knew the people would adore me so much? Stop that! Incoming! Yeah! Tough! क्या है? Yep. How dare you! How brilliant! Ah. Yep. जो यहाँ पड़ेगा.
brilliant! Don't blink! Hey! Speed of light! Cut to the chase! We'll need more. मैंने फालतू कोई भी लड़ने क्यों आता रहता है भाई से गायब हो गया मैं ढूंढ रही हूँ कहाँ है यार मुझे नहीं लड़ना तुझसे बीच चले जाए यहाँ से ऊपर है क्या ये और ऊपर तक जाना कैसे है The show begins! Don't blink! I'll be fine. Windblade! How brilliant! Verdict is... Speed of light! Windblade! Time for retribution! Nowhere to hide.
I suppose this will do. Let my name echo in song! Be gone! मैं तो दिख नहीं रहा. The show begins! Ha! Burn! Don't blink! Oh, brilliant! Ta! Ah! Yeah! Speed of light! The show begins! Cha! Cha! Ha! Yeah! Cha! Ha! Cha! Ha! Ha! Yeah! Cha! 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 May I present? Oh, brilliant! Yep. Stop that! Now against the bubble. May I present? How dare you! Windblade! Ha! Verdict is... Don't blink! Huh? May I present? Ready रहना. Ha! फिर आती है बार-बार. How brilliant!
Forward comes Shadow. मेहनत करके हमने से मारा ही क्यों जब यहाँ पे कुछ है ही नहीं. It's time to sing. Whenever you're ready. Da 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 da. What happened? These flowers are jumping. They look really angry. Is it because you sang a song for Mondstadt that they don't understand here in Liyue? May I present? Ha! Ha! Burn! Ha! Prepare to be blown away. Duh. Ha! Ha! Hmm. Ha! Hmm. Ha! The show begins. Speed of light. Huh? Got lucky that time. Huh. Don't blink. Yeah. Hmm. Ha! Hmm. Ha! Hmm. Ha! Ah! Yeah. Yeah. Time for retribution! Windblade. Hip. Hmm. Ha! Ha! Hmm. Ha! Ta! Yeah. Yeah. Ha! Ha! Your verdict is? Ha! Ah! Ah! How brilliant! Hmm. Ha! Ha! Yeah. Yeah. Hmm. Ha! Hmm. Ha! 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 Hmm. Burn! Ha! Yeah! Ha! Yeah. Yeah. Ah. Yeah. Ah. Ha! Ha! Hmm. Ha! Yeah. Your verdict is? Windblade. Incoming. Ka
to the chase. Let my name echo in song. Burn! Those weren't glaze lilies. Glaze lilies wouldn't hit people. This little monster is known as a whopper flower. Strange. The glaze lilies used as a disguise were buried with the whopper flower for too long. Well, that's nice and all, but will those petals be... Unfortunately... That's so lame. Excuse me. Are you searching for glaze lily? Oh, hey! It's... What's-her-face? Yongu? You've completely... Ah! That reminds me. Well, it sure would have been better if you told... Didn't I tell you the way? Nope. We found the way on our own. Oh, I see. Uh-oh. I guess I... Something... She's acting different from the... Oh, well, I met... You came all the way out here to see the flower? Yujing Terrace is where, whenever my duties take me near Yujing Terrace these days, I draw... Oh, so... No, it's quite all right. When the Archon War came to its end 2,000 years ago, the first iteration... Yes. Now that the spirit of Rex Lapis has returned to the heaven, the other 5, including Inazuma's Raiden Shogun, are of the current 7 Archons. The youngest. This means that Liyue had been under Rex Lapis's rule from the moment it was... So what do you think of this? Huh? This... As a mortal, but as an Adeptus, I think I will... Huh? Did you just... Yes, I am a mix of human and Qilin. Adeptus blood. After the war ended, I signed a contract with Rex Lapis and took the position as secretary for the Qixing. I've continued those duties to this very day. Well, let's save that converse. I also know where wild We dare not. Oh, so did you sing a song? Indeed, I did. Wow, so you really know your... No, it is you who I should be thanking. If you would excuse me. And that just about does it. Given the ease of picking glaze lilies... Yeah, Paimon can already... I've had enough ventures in my life. Beginning a new undertaking is always difficult at first, so you must be careful to take the time to step back and... Wow. See? Jean? Alright, I think it's about time we... बस आ गया ये घटिया डायलॉग्स देख रहा था तुम्हारे गेम के हाँ मुझे डिस्कॉर्ड पे देखा वरना मुझे तुम्हारी आवाज भी नहीं आई मैं कुछ बोला ही नहीं ना और जोकर बच्चे वो तुम्हारी लाइफ पे है ना बंद करने वाली थी ड्रैग करो कर रहा हूँ भाई मैं हाँ जी आ गया बच्चे कौन बच्चा कौन कौन हेलो ये जो चिढ़ रहा है 2 साल के बच्चे जैसे था अरे 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 क्या बोल रहे हो यार आपको आप इतने खास इंसान हो आपको मैं कुछ बोल भी नहीं सकता कोई बात नहीं क्योंकि कुछ होना भी तो चाहिए इंसान जिसको मैं बोलूं ओह माय गॉड हेलो You're the consultant to the Millilith are watching our every move. Time. The Adepti of Julian Karst are Do they intend to exercise I've heard that some, however, both sides were quite obstinate. It seems inevitable. The Adepti do not acknowledge. Surely the Liyue Qixing are not... आपको उठा के 3-4 बार जगह फेंक सकता हूँ मैं? मैं? Now? CEO वाला नहीं कर रहे हो, CEO वाला कर रहे हो। Only now do they want to start keeping anyway. Mr. Zhong. और उसमें आप हेल्प कर रहे हो मेरी, है ना?
Do you नहीं भाई intend to use your... Neither path is in... Oh, by the बोल way, Mr. Zhongli. Things are होएगा taking मेरे a से turn. I'm afraid I must leave now. Consider your next course of action. Having connections भाई with the क्या चल रहा है Martinez तुम्हारा seems to be quite the double-edged sword. 23 क्या क्वेस्ट करने So पड़ेंगे what तब does जाके वो Zhongli अभी mean वाला हो by पाएगा इवेंट। looking for the 23 sequel? क्वेस्ट I don't get किसने it. कही He must be waiting for. वो But लिखा where होता could है। we find? Where would he go at a और time ये like this? छोटी सी उड़ती हुई जो है, बहुत इरिटेट करती है भाई नहीं तो इसका नाम बोल रहा हूँ मैं, ये चेरी को याद है? साइमन। चेरी तुम्हें याद है तुम्हें? साइमन। नहीं तो वो नाम याद है? साइमन वही तो उसका नाम ही तो बोल रही हूँ। अरे यार याद है कहाँ पे और सुना है गेम के अलावा? साइमन का नाम हाँ नहीं तो। वो याद नहीं तुम्हें? तुमने वो मूवी देखी थी बहुत ही शानदार, हेरिडिटरी? हाँ उसमें जो वो गोट थी, गोट पाइमोनी तो था। हो सकता है मुझे याद नहीं है। गोट नहीं, सॉरी वो तो अलग था। वो जो जिसको वो एंड में वो नहीं दिखाते, वो एक ट्री हाउस जैसे में सब वो सर्वर कटे वटे पता नहीं कैसे मरे मुरे से। मेरे को उसमें किसी का भी नाम नहीं याद है, बस मूवी याद है। ये देखो नहीं इसमें है तो ना, एक मिनट, जोकर, ये देखो यहाँ हम्म पे लिखा आता है रिमेनिंग 23, तो ये पूरे 23 कंप्लीट करने पड़ेंगे ना। प्री रिक्विसाइट अरे नो भाई वही तो। आपने खेल लिया तो आप तो खेल लो ना, आपके तो आर्कन तो हो ही रखे होंगे। सब हो रखे हैं, ये बच रहा है नया पूरा मैप बच रहा है। ऐसे ही देना अभी तो मेरे को जाना है तो मैं बंद कर देती। तो हेरिडिटरी में जो मेन डीमन होता है वही तो होता है, उसी का नाम मतलब एक्चुअली जो उसका नाम है पाइमोनी तो है वो। हो सकता है, मेरे को याद नहीं। मैं उसमें उस मूवी का तो मुझे कोई भी नाम नहीं याद। बच्ची याद है ना, इसका सर कट के गिर जाता है। पूरी याद है पूरी, पर नाम किसी का नहीं याद। अच्छा लास्ट वो ट्री हाउस वाला सीन पता है ना? हाँ कैसी बात कर रहे हो भाई, किसका सर काट रहे हो तुम? छी एक हमने मूवी देखी थी हॉरर टाइप की। अच्छा वो वाली कह रहे हो क्या, विचर? नहीं भाई शायद हेरिडिटरी। उसी में तो होता है, ट्री हाउस में वो उसके मम्मी पापा रहते हैं शायद, ऐसे ही ना? नहीं भाई हेरिडिटरी ट्री हाउस में वो उस डीमन की वो करते हैं, हेलो रिचुअल्स परफॉर्म करते हैं लास्ट हेलो में। हाँ मैं समझ गया, मैंने शायद देखी है वो, देखी है मैंने। उसमें साइड में दीवार पे फेसेस लगे रहते हैं। नहीं ऐसी भाई कुछ है यार, मेरे को याद नहीं, मैंने देखी होंगी। कोई बात छोटी सी नहीं। बच्ची रहती है, बड़ी सी डायन होती है ऐसे, और लंबे लंबे हाथ वाली, बड़ी शायद सी वही बहन है। तो कोई नहीं रहती, लेकिन छोटी सी बच्ची जरूर रहती है और मर जाती है स्टार्टिंग में। और तो नहीं मिलती से वो भी। हम्म फिर मैं स्ट्रीम बंद कर रही हूँ। ठीक है ठीक है। Kimi no naka ni aru wa koto wa okisen. Solera ga masubareru no wa shinnazo. Kimi no naka ni aru wa koto wa okisen. Solera ga masubareru no wa shinnazo. Kimi no naka ni aru wa koto wa okisen. Solera ga masubareru no wa shinnazo.
君の中にあるはことは大き線それらが結ばれるのは真謎ツツルルルルルルルルルルルルルルツツルルルルルルルルルルルルル君の中にあるはことは大き線それらが結ばれるのは真謎ツツルルルルルルルルルルルルルルツツルルルルルルルルルルルルル君の中にあるはことは大き線それらが結ばれるのは真謎ツツルルルルルルルルルルルルルツツルルルルルルルルルルルル君の中にあるはことは大き線それらが結ばれるのは真謎ツツルルルルルルルルルルルルルツツルルルルルルルルルルルルル君の中にあるはことは大き線それらが結ばれるのは真謎ツツルルルルルルルルルルルルルツツルルルルルルルルルルルル君の中にあるはことは大き線それらが結ばれるのは真謎ツツルルルルルルルルルルルルルツツルルルルルルルルルルルルル君の中にあるはことは大き線それらが結ばれるのは真謎ツツルルルルルルルルルルルルルツツルルルルルルルルルルルル君の中にあるはことは大き線それらが結ばれるのは真謎